Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this channel, we have lot of videos how you should prepare for interview for IBP SPO, SBI PO, and these videos are placed in shape of playlist. Playlist link is available in description box. For your benefit, I have created a exclusive Telegram channel also where I am sharing few videos per day. Just you can watch those videos and plan your preparation effectively, spending 1 hour a day. That link is also available in description box. If you miss out both the links, you can put a comment. I will place you links again. Now, I ask few questions in last few days. So we will be covering a suggestive answer for those questions gradually. So today I am covering the GST 2 reforms. Now, whenever we are addressing any topic and giving answer to the topic, we should always be crisp and we should contain some official information in our answer. Sometimes the vague answers or incorrect answers can spoil our image in interview. The purpose of such questions is just to see how aware you are about the present scenario that is happening around us. So whenever some question is based on latest events, it is just to check the awareness of the candidate. So GST 2 is a important reform which government is trying to drum around. So this can be a possible area of question. But our answer should be on official lines. Instead of becoming critic, instead of becoming so much supportive, we should carry the official line and we should make our answer that is based on facts. Now, recently concluded press conference, the FMS said that once GST was introduced, the collection estimated was with a sacrifice of around 15%, and for which central government has given the assurance to states that this will be compensated over a period of time. And that's why when GST was launched, it was launched with a pinch of salt that ultimate this may result into fall in revenue, but they wanted to make it a reform, make it simpler. So during this process, some slabs were kept higher and some slabs were kept lower because it was only an experimental thing. Because the various tax were to be subsumed in GST. So historical data was not available. So it was all permutation combinations. And over the period of time, it was observed that after some hiccup, the GST started yielding the result. And government revenue was growing over a period of time, month after month. A new record was set in, and for some months, even the collection was above rupees 2 lakh crore per month. So once government has achieved this level of 2 lakh crore, then another thought was coming whether government can sacrifice a part of revenue and give impetus to demand. Because when you are going through a high tax regime, naturally the purchasing power of common man reduces. But sometimes taxation is also a compulsion or a requirement as per the government estimates, because they want to use this money for various infra projects and various other activities. So the government has to strike a balance between the taxation rates and the likely expenditure that they have to incur, and they have to maintain a fiscal balance also. So what government has done is, over a period of time, when they have felt that now time is ripe, when they can, you can say, sacrifice some revenue, and by sacrificing such revenue, if the cost of goods comes down at the hands of consumer,
it will lead into spurt of demand, and the spurt will compensate partially the sacrificed revenue. So this experiment was done as GST2, wherein the ultimate theory is if taxation rate is lower, more demand is emerging, then overall tax collection may ultimately reach the level from where this tax relief was given, and that's why government has estimated the compensation, or you can say sacrifice, at a lower level than it seems to be, because some rates have come down by 10%, some rates might have come down from say 12 to 5%, 7%, but the overall revenue sacrifice is not calculated at such a high rate, meaning whereby that some compensation will come by way of higher sale of goods. So what does it mean for economy? For a company who is manufacturer, if price goes down due to tax and sales increases, naturally the income of that company will, profitability of that company will improve, because they will be able to sell more goods, and more goods selling means higher realization and the healthier company's financials. So this is one scenario, and that's why some of the companies are cheerful that their sales will go up and ultimately it will support their balance sheet. On the other hand, consumers are cheerful because consumers will save money for expenses of other utilities and other requirements. And at the same time, government will keep watching the ultimate impact if through the direct taxation, due to higher income generated by the companies, they get the corporate tax going up, or higher demand, more goods consumed, compensate the GST, they may continue with the lower GST regime for future. So GST2 reform is meant to boost the demand. This is one. To raise the consumption and to support, on one hand, the companies, those may be suffering on account of some sluggishness in export due to various US tariffs imposed recently. So this is a combination of things. Although government is not officially linking this with the US tariffs, but this is one of, you can say, indirect reasons that we can also incorporate in our answer, because ultimately you have to keep your companies going. So if demand is not coming internationally, so you have to build the demand locally, and you have to become vocal for local, so that more consumption happens in your country, and these companies, those are manufacturing, their losses on account of lesser exports may be compensated. Although the export data released says the exports are still growing, but naturally that is very low level. Some loss of export has happened, but sometime data is masked due to the things we are saying it is still growing. But at what rate? If the growth rate has come down, that means some effect is there. So you have to take care of these effects also. So there can be more areas, more points you can add, but the only way of giving you a model answer is that your answer should include the official line. Whatever government data is available, whatever plus point government has highlighted, we should try to highlight in our answer, because we are competing for a government position where we will be implementing the government policies. So our mindset set should reflect to the interview board that this is a person who can implement the government policies and who can shield the government policies. So both side of your personality should be reflected in answer, and that's why such questions are asked. Whether the person is only critical, whether the person is able to toe the official line, and whether the person has officer-like qualities where he can execute the things as desired by the government or top management. So all these things are kept in mind in the interview, and what type of
officer like qualities are there. There is already a video I shared that on community on our Telegram channel also. Watch those videos. This will help you. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। IBPS PO इंटरव्यू की तैयारी के लिए, SBI PO इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी सपोर्ट के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर डेली कुछ वीडियोस के लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, जिनको आप देखेंगे उससे आपकी निरंतर तैयारी होती रहेगी। अगर आपको ये लिंक नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कमेंट कॉलम में अपना कमेंट कर दें, मैं लिंक दोबारा दे दूँगा। अब पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ प्रश्न पूछे आपसे और मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर हम एक सजेस्टिव आंसर की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी एक एक करके हम कवर कर रहे हैं। आज हम पहला प्रश्न कवर कर रहे हैं GST 2। अब इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी हम इंटरव्यू में आंसर देते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा आंसर जो ऑफिशियल लाइन है उसके साथ मैच करना चाहिए, क्योंकि कई बार कई कैंडिडेट बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ हम इसमें क्रिटिकल होने की आवश्यकता है। आपको वो ऑफिसर पोजीशन के लिए चुन रहे हैं जो ऐसी पोजीशन है जिसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसके जो हाइलाइट्स हैं उसको हाईलाइट करना आना चाहिए, क्योंकि आप ऑफिसर लेवल पे जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इंडिपेंडेंट विचार हर व्यक्ति के डिफरेंट हो सकते हैं, पर जब हम एक पोस्ट के ऊपर होते हैं तो वहाँ पर हमारा व्यक्तित्व एक साइड होता है और उस पोस्ट की जिम्मेवारियाँ दूसरी तरफ होती हैं, और वही निर्वाह हमें करनी होती हैं। तो उसमें कई बार आर्टिफिशियलिटी भी होती है, मगर वो करनी होती है। तो इंटरव्यू में भी यही देखा जाता है कि क्या ये कैंडिडेट कैपेबल है इस तरह की जिम्मेवारियां निर्वाह करने के, जो कि गवर्नमेंट लाइन को टो कर पाएगा, गवर्नमेंट की जो बातें हैं वो लोगों के सामने रख पाएगा। तो ये देखा जाता है, और इस तरह के क्वेश्चंस का आशय भी यही होता है, देखना कि ये किस तरह के विचार इस पे अपने प्रकट करता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि GST का कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। GST जब ये लाया गया था तो बहुत सारे टैक्स इसके अंदर समयूज किए गए थे, और उस समय ये माना गया था कि लगभग 15% का रेवेन्यू लॉस हो सकता है अगर जो प्रेजेंट रेट GST के रिप्लेस किए जा रहे हैं और जो टैक्सेस हटाए जा रहे हैं। तो एक ये डर था, और इस डर की वजह से कई स्टेट इसमें आना नहीं चाहते थे, कई स्टेट आना चाहते थे। तो उस समय सेंटर ने एक फार्मूला प्रपोज किया कि जो भी टैक्स के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी उसको एक किटी क्रिएट की जाएगी जिससे कंपनसेट किया जाएगा, और पहले 5 साल उसको कंपनसेट भी किया सेंटर ने। धीरे धीरे जब GST की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, GST लागू होता गया और बॉटलनेक्स क्लियर होने लगे, लोगों को समझ आने लगा, तो ये देखा गया कि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आती चली गई, और ग्रोथ आने से GST कलेक्शन भी अच्छी होनी शुरू हो गई, और मंथ आफ्टर मंथ ये राइज होता गया। जैसे जैसे ये राइज होता गया, कुछ बार ये 2 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर गया। अब जब ये लेवल क्रॉस कर गया तो यहाँ पर कुछ लोगों का विचार ये था कि अगर हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि अगर हम कुछ टैक्सेशन रेट को गिरा लें और उससे एक डिमांड क्रिएट कर लें, और उस डिमांड के क्रिएट होने से हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो सेक्रीफाइस है टैक्स की वो कंपनसेट हो जाए और GST की कलेक्शन फिर बढ़नी शुरू हो जाए। तो ये एक GST 2 रिफॉर्म में ये किया गया कि कुछ टैक्स रेट्स मर्ज करके एक तो सिंप्लीफाई कर दिया, नंबर ऑफ टैक्स रेट्स कम कर दिए। दूसरा जो मेन एफर्ट था कि टैक्स रेट कम कर दिए जाए ताकि ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकें, डिमांड बढ़ सके, कंजम्पशन बढ़ सके, और उससे इनडायरेक्टली जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी सेल जब बढ़ेगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो नेचुरली कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ेगा, वहाँ से गवर्नमेंट कंपनसेट हो जाएगी। दूसरा, जब आप प्राइस गिरा देते हैं किसी चीज़ की तो नेचुरल है कि वो व्यक्ति जो बचा हुआ पैसा है उससे कुछ और गुड्स खरीदेगा, वहाँ भी टैक्स मिलेगा। तो ये माना गया कि जो रियल टैक्स का लॉस होगा इसके अंदर वो उतना नहीं होगा जितना कि सामने से दिख रहा है। जो स्लैब रेट के गिरने से दिख रहा है, हो सकता है टोटल जो लॉस है टैक्स कलेक्शन का वो उतना ना आए, मगर जो उससे सपोर्ट मिले इकोनॉमी को वो उसको आउटप्लेस कर जाए, उसको आउटपेस कर जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको जो है एक रिफॉर्म का नाम दिया है, और इसके ऊपर वो बार बार अपनी एक सक्सेस स्टोरी भी बता रही है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली बताया
कि बहुत अच्छी सेल हुई है, कुछ सेक्टर्स के अंदर उनके आंकड़े भी रिलीज़ किए। तो जब आपकी ग्रोथ आती है इकोनॉमी के अंदर, तो ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम को इससे फ़ायदा होता है। तो ये जो जीएसटी 2 रिफॉर्म है, बेसिकली एक ग्रोथ मोमेंटम को बढ़ाने का एफर्ट है। दूसरा, जो भी टैक्स की इसमें लॉसेस आएंगे या रिडक्शन होएगी, उसको भी माना जा रहा है कि बढ़ी हुई ग्रोथ से वो आने वाले दिनों में कंपनसेट हो जाएगा। तीसरा चीज़ ये है कि जिसको कि अभी ऑफिशियली गवर्नमेंट नहीं कह रही है, बट ये भी माना जा रहा है कि जब से यूएस टैरिफ लगे, तो कुछ एक्सपोर्टर्स हैं उनकी डिमांड में नेचुरल कमी आई है, क्योंकि जब गुड्स बाहर नहीं जा रही तो उनकी डिमांड में कमी आई है। हालांकि एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा आया है उसमें ग्रोथ है, मगर कई बार जो आंकड़े होते हैं ना, रियल चीज़ को मास्क कर जाते हैं। मान लीजिए नॉर्मल ग्रोथ आनी चाहिए थी 15% और आपकी आई है 3%, तो कहीं ना कहीं तो मतलब उसमें गिरावट आई है। तो इसलिए उनकी गुड्स बिकती नहीं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिक रही तो घरेलू बाजार में बिक जाए। तो इसीलिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाता है कि जो चीज़ें हैं देश के लोग कंज्यूम कर लें, बाहर के लोग नहीं कर रहे, वहाँ पे बैरियर्स लग गए, कोई बात नहीं, हम बना रहे हैं, हमारे देश के लोग कंज्यूम कर लें। तो वो भी इसके अंदर एक प्रयास था कि अगर हम प्राइजेस गिरा देंगे तो हो सकता है डोमेस्टिक भी डिमांड इसके अंदर बूस्ट हो जाए, और उससे जो हमारा सारा सिस्टम है इकोनॉमी का वो इग्निटेड रहे, और जो उसका असर है एक्सटर्नल फैक्टर्स का वो कम से कम हो। तो वैसे तो ऑफिशियल लाइन तो इसकी रिफॉर्म की है, मगर अंडरलाइंग इसके अंदर अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू में अपना आंसर देते हैं तो सामने जो बोर्ड है उसको ये प्रतीत होना चाहिए कि आप एक एज ए ऑफिशियल बात कर रहे हैं। आपकी बात के अंदर वो तत्व है कि आप गवर्नमेंट की जो लाइन को टो कर सकते हैं, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट बैंक के अंदर ऑफिसर पोजीशन के लिए चुने जा रहे हैं, और वहाँ पर आपको गवर्नमेंट की नीतियों को अल्टीमेटली ज़मीन पर उतारना है। आप एग्जीक्यूटर हैं, तो इसलिए आपकी माइंड सेट भी एग्जीक्यूटर की होनी चाहिए, केवल क्रिटिसिज्म की नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है, तो इसमें कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं जिसको जज किया जाता है। उस पर अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो है, उसको ध्यान से देखें। केवल आंसर का कंटेंट ही आपके नंबरों को डिटरमिन नहीं करता है, आपने आंसर कैसे दिया है, उस आंसर से आपकी पर्सनालिटी का कौन सा हिस्सा उजागर हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और काफ़ी बच्चे यहाँ पर फेल कर जाते हैं क्योंकि उनको इसका पता ही नहीं होता कि ये पूछा क्यों जा रहा है प्रश्न, ये इंटरव्यू क्यों हो रहा है। और ये सारी बातें मैंने अपने प्ले लिस्ट में कवर की हैं, और जो बच्चे उसको ध्यान से उन वीडियोस को देख लेते हैं उनके बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, और वो बाद में मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं कि सर आपने ये फ्री मटेरियल हमें दे दिया जो बाज़ार के अंदर बहुत महंगा अवेलेबल होता है, मगर उससे आपकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। जब खुद आप सुनेंगे तो हाँ, मुझे खुद तारीफ अपनी करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही तारीफ करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।